Hello and hi everyone. Welcome back to my session. This is a session on ICSE Class 8 and we are presenting today English Literature. This is a session on English Literature for Class 8 ICSE and it is presented by me Simran Priya. Now moving ahead, what is our topic of discussion? आज हम लोग कौन सा chapter discuss करने वाले हैं या कौन सी story पढ़ने वाले बच्चा? We are discussing The Eyes Have It by Ruskin Bond and this is part B. That means मैंने आधे story को आपको part A में बता दिया था. I would like to welcome hi Dream Girls. Good evening बच्चा. Good evening खुशबू पोद्दार. Thank you so much बच्चा for joining in. Call all your friends. Call everyone that you know that will get who will get benefited by these sessions. So call all of them and we will soon be starting our sessions. Okay. Moving ahead, before starting my session, let me introduce myself first. So my name is Simran Priya. I have done my graduation and a master's from Delhi University. Currently, I am teaching in an ICSE school, bacha, and this is my online venture where I bring up several educational topics on related to history, geography, biology, English, and also soon I will be bringing mathematics. So these are the papers, these are the subjects on which I have a forte. So I am bringing these subjects for you, bacha. Now moving ahead, before starting my session, मैं आप लोगों को बता दूं, आप मुझे Telegram पर join कर सकते हो if you want the PDFs and the notes of my session. So you can go ahead and join me on Telegram. You can also join me on Instagram if you want to know more about me. Plus, if you want to convey anything, you want to contact me, you want to give tell me that ये PDF ये publication की book मैम आप इस पे chapters बनाओ उस पे बनाओ आप क्या chapter आपको क्या कौन से subjects चाहते हो so आप मुझे हमेशा mail कर सकते हो simranpriya1596@gmail पे आपको वहां पर अपना नाम स्कूल प्लेस क्लास सब्जेक्ट और पब्लिकेशन लिखना होगा प्लस आपको जो भी आपने पीडीएफ स्कैन कर रखा है उसे अटैच करना होगा एंड यू कैन सेंड इट टू मी आई वुड लाइक टू से हेलो टू आरती सुमन एंड अर्शी आनंद थैंक यू बच्चा फॉर जॉइनिंग इन सो लेट्स start with our session. So कल तक हम लोगों ने पढ़ा कि this is a train journey. ये क्या था? This was a very delightful train journey in which the narrator was traveling to Missouri via Dehra and there was a girl जो एक girl enter करती है उसकी compartment में and she was traveling to Saharanpur. So they were in a little conversation. The last thing that we discussed was the narrator asked the girl that what it looked like outside. So the girl replied कि आप खुद ही खिड़की के बाहर देख लो. So इसके वजह से नरेटर खिड़की की तरफ मुड़ गए और वो खिड़की की तरफ नजारे देखने की कोशिश करने लगे. हालांकि you remember that the narrator is a blind person. Okay? उसके आगे क्या होता है? Have you noticed? I ventured that the trees seems to be moving while we seems to be standing still. Now he said that क्या तुमने ये नोटिस किया है कि ये पेड़ जो हैं लगते हैं कि ये चल रहे हैं. They are continuously moving and we are the people who are standing still. And हमें क्या है कि हम लोग यहाँ पर still बैठे हुए हैं. But actually the train is moving and the trees are standing still. So ये contemplation आप लोगों ने physics में भी किया होगा कि जब हम लोग train से travel करते हैं so a thing that is in motion उसे लगता है कि सामने वाली चीज motion में है हालांकि the trees always वो अपने जगह पर रहती है and we are moving along with the train, right? So he said this that always happens. So लड़की ने कहा कि ये तो हमेशा होता है. Do you see any animals? Then the girl asked कि क्या तुम्हें कोई जानवर दिख रहे हैं खिड़की के बाहर? Now the narrator replied, no. I answered very confidently. हालांकि the narrator couldn't see. Of course, hello Ishita Roy. Good evening, Bacha. Jishu Bachi, you are in 7th standard, but you want to hear this story. Of course, Bacha, you are more than welcome to hear this story. This is a beautiful story.
story written by Ruskin Bond, who was a child author who used to write stories for children. So of course you can study, but you can hear this, bacha. Yes, yes, Khushbu. Of course, he is trying to prevent that the girl did not. ये वो क्या कोशिश कर रहा है कि girl को ये ना पता चल जाए कि मैं अंधा हूँ. That the narrator is blind. So उसने क्या बोला जब लड़की ने पूछा कि क्या आपको बाहर में कोई जानवर दिख रहे हैं? So the narrator said no, and he was very confident in his answer. हालांकि वो तो देख ही नहीं सकता था. वो उसने क्यों confidently बच्चा ये चीज बोला? I knew that there was of the forest near Dehra. Now उसे ये पता था कि there were no animals near the forest in Dehra. कि उसे ये पता था कि देहरा में फॉरेस्ट के आसपास कोई भी ऐसे जानवर नहीं मिलते. इसी वजह से उन्होंने ये बोला. ओके, मूविंग अहेड. हेलो खुशबू भारती, थैंक यू सो मच बच्चा फॉर joining in. Okay, now I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. नाउ अब मैंने क्या किया, मैंने अपने अपने आप को विंडो से मोड़कर, मैं विंडो की तरफ देख रहा था. द नरेटर वाज सीइंग आउटसाइड द विंडो, सो वो उससे मुड़कर वो लड़की की तरफ अपना फेस करके बैठ गया. और थोड़ी देर तक दोनों के बीच में साइलेंस थी. नोबडी वाज स्पीकिंग एनीथिंग. ओके, मूविंग अहेड. You have an interesting face. The narrator made a remark to the girl that the girl's face is very interesting. I remarked. That means the narrator remarked this, that तुम्हारा फेस बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Okay, I was becoming a quite daring, but it was a safe remark. तो ये करते हुए नरेटर अपने दिमाग में ये सोचता है कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट, ऐसा रिमार्क देने में मैं थोड़ा सा बहुत डेयरिंग हो रहा हूँ, मैं बहुत हिम्मत जुटाकर ये कर रहा हूँ, लेकिन ये एक सेफ रिमार्क है. मैं कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जिससे लड़की को शायद अच्छा ना लगे. सो मैंने एक बहुत सेफ रिमार्क दिया. Few girls can resist flattery. कुछ लड़कियों को ये flattering words, ये flattering remarks नहीं अच्छे लग सकते हैं. But this girl that was sitting in front of him, she laughed pleasantly, a clear ringing laugh. So while as she heard this remark, वो बहुत खुशी से, बहुत pleasantly, बहुत calmly वो हंस पड़ती है इस बात पे. And the laugh was heard as a clear ringing laugh. Okay, बहुत joy, बहुत pleasant laugh था. Okay, it's nice to be told I am an interesting face. उसने कहा ये बहुत अच्छा मुझे सुन के लगा कि आपने बोला कि मेरी फेस इंटरेस्टिंग है. I am tired of people telling me I have a pretty face because I have got tired. मैं थक चुकी हूँ लोगों के ये सुन के कि मेरी फेस बहुत pretty है. I have a beautiful face. Now you remarked that I have an interesting face, right? So this is quite a good remark, quite a nice remark. Oh, so you do have a pretty face, I thought. So now as the girl reciprocated कि मैं ये सुन के थक चुकी हूँ कि मेरे लोग मुझे कहते हैं कि I have a pretty face. So the narrator thought कि अच्छा तो तुम pretty दिखती हो, क्योंकि narrator देख नहीं सकता, right? वो अपने अपने कॉन्वर्सेशन से ही पता कर रहा है कि लड़की आखिर दिखती कैसी है. So he is thinking that oh you have a pretty face. Now and aloud I said, और वो फिर ये सोचते हुए तेज से बोलता है, well an interesting face can also be pretty. And he said that मैंने आपको बोला कि आपकी interesting face है, and of course एक interesting face pretty तो हो ही सकती है, right? Now, hello, Arshi Anand. Thank you, Bacha. Good evening. Thank you, Bacha, for joining in. Okay, now you are a very gallant young man. Now, she reciprocated, and she said that you are a very gallant young man. Gallant मतलब क्या होता है बच्चा? Gallant मतलब होता है brave. You are a very brave, courageous man. What you are a very brave, courageous man, she said. But why are you so serious? तुम इतने
ब्रेव हो, तुम इतने करेजियस हो, लेकिन तुम इतना सीरियस क्यों लग रहे हो? ओके, सो आई थॉट, द नरेटर थॉट, वो अपना कंटेम्पलेट कर रहा है अगेन, देन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, कि अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं बीच बीच में थोड़ा हंस भी दूं उसके लिए, सिर्फ सामने वाले जो जिससे कॉन्वर्सेशन हो रही है उसके लिए मैं थोड़ा हंस भी दूंगा, ताकि उसे लगे कि मैं सीरियस नहीं हूँ। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। लेकिन लेकिन जब मैं हंसता हूँ, या ये विचार कि मैं बीच बीच में हंस दूंगा, तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है। आई फील इन ट्रबल और आई फील वेरी लोनली। ओके, मूविंग अहेड, वेल वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड। उसने बोला, द नरेटर सेड कि अब तो बस कुछ ही देर में तुम्हारा स्टेशन आने वाला है। ओके, द नरेटर सेड कि अब बस कुछ ही देर में क्या होने वाला है, तुम्हारा स्टेशन आने वाला है। Thank goodness, the girl said, thank goodness it is a short journey. Thankfully this is a extremely short journey, क्योंकि मैं एक लंबी जर्नी ट्रेन में मैं 2-3 घंटे से ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती। The girl reciprocated this. Okay, yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. But the narrator in his mind is thinking, लेकिन मैं इस ट्रेन की जर्नी में अनगिनत लम्हे बिता सकता हूँ, अनगिनत लेंथ ऑफ टाइम बिता सकता हूँ, if I can sit here and listen to you talking. He is not actually saying this, but he is thinking this, contemplating this in his mind. Okay, her voice had the sparkle of the mountain stream. उसकी वॉइस उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी, वो बहुत स्पार्कलिंग, बहुत cheerful वॉइस थी उसकी। As soon as she would leave the train, she would forget our brief encounter. So उसे ऐसा, वो अपने मन में सोच रहा था कि जैसे ही वो अपने स्टेशन पे वो उतरेगी, वो हमारी इस बीच में हुए इस small brief encounter को, that we had a conversation between us, वो जरूर इसे भूल जाएगी. But it would stay with me for the rest of the journey and for time after. लेकिन ये ब्यूटीफुल जो एनकाउंटर है, ये जो ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन है मेरा आप उस लड़की के साथ, ये शायद मुझे इस पूरी जर्नी टिल देहरा मुझे याद रहेगी, और हो सकता है उसके बाद भी, टाइम आफ्टर भी मुझे ये याद रहे. Okay, moving ahead. The engine's whistle shrinked. The carriage wheels changed their sound and rhythm. Now the engine whistle मतलब बच्चा ट्रेन की जो सीटी वो जो देती है, वो क्या होने लगी, वो फेड श्रिंक होने लगी, ट्रेन अब रुकने वाली है. This is a sign of that. Carriage whistle change their sound, और जब ट्रेन रुकती है एक अलग तरीके का साउंड हमें सुनाई पड़ता है. So that sound was that sound I can hear. The girl got up and began to collect her thing. और लड़की वो उठ जाती है अपने सीट से और अपनी सामान को इकट्ठा करने लगती है. I wondered, the narrator wondered and think, if she wore her hair in a bun or if it was plaited. Now, अब वो नरेटर अपने दिमाग में ऐसे मन में सोच रहा है कि क्या उस लड़की ने अपने बाल को एक जूड़े में बनाया होगा, the bun that I have done, or she has plaited मतलब braids बनाए होंगे. Okay, now perhaps it was hanging loose from her shoulders. क्यों उसे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो जो हल्की नजर से वो देख पा रहे हैं, तो उसे लग रहा है कि उसके बाल अब थोड़े से खुले हुए उसके शोल्डर पे लटके हुए हैं. तो क्या उसने बन बनाया है या ब्रेड्स क्या है, वो ये सोच रहा है, वो सोचने की कोशिश कर रहा है. और was it cut very short, और या हो सकता है कि उसके बाल बहुत छोटे हों. Okay, now the train drew slowly into the station. Now धीरे धीरे ट्रेन आराम से वो स्टेशन पे, सहारनपुर के स्टेशन पे घुस जाती है. Outside there was the shouting of porters and vendors. बाहर में हमें क्या दिखते हैं, पोर्टर्स और वेंडर्स. बच्चा पोर्टर्स कौन होते हैं, पर्सन
लगेज, जो हेल्प करते हैं कैरी करने में लगेज को, उसे हम लोग लगेज या फिर हैवी मटेरियल्स को जो ट्रेन पे जो कैरी करते हैं उन्हें पोर्टर्स कहते हैं। और वेंडर्स होते हैं जो लोग ऐसा कैरी करके कुछ सेल करते हैं। ओके, जो सेल करते हैं कोई सामान, कोई चिप्स उप्स, ये सब चीज को उसे वेंडर्स कहते हैं। ओके, सो आउटसाइड द स्टेशन जैसे ही ट्रेन वहां पर रुकी, हम लोगों को पोर्टर्स और वेंडर्स की आवाज सुनाई देने लगी एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर। और एक औरत की आवाज सुनाई पड़ती है जो बहुत हाई पिच में कैरेज डोर पर बोलती है। दैट वॉइस मस्ट बिलोंग टू द गर्ल्स आंट। सो ये वॉइस सुनकर द नरेटर कॉन्टेम्पलेटेड, द नरेटर थॉट दैट ये आवाज जरूर लड़की की आंट की होगी। ओके, goodbye, the girl said. Now, before leaving, the girl wished the narrator goodbye and take a part. Okay, वहां से वो goodbye करके वो चली जाती है. Now she was standing very close to me. Now this again the narrator is thinking कि ये अभी जो लड़की है वो बहुत closely मेरे बहुत close खड़ी थी. So close that the perfume from her hair was tantalizing. इतनी क्लोज वो मेरी खड़ी थी कि जो वो परफ्यूम, जो उसके बाल की खुशबू थी, दैट वाज एक्सट्रीमली टैंटलाइजिंग। टैंटलाइजिंग मींस that a desire, एक ऐसी चीज that making one want something। जो tantalizing means जो ऐसी खुशबू थी कि मुझे ऐसा मन होने लगे कि मुझे वो चीज, वो बाल वो चाहिए, काश मैं उसे छू पाता उस बाल को, काश वैसे बाल मेरे भी होते। ओके, so that was very attractive, that fragrance, that perfume of her hair was very attractive। Okay, I wanted to raise my hand and touch her hair but she moved away। मैं क्या करना चाहता था, I wanted to touch her hair, लेकिन वो तुरंत वो चली गई। Only the scent of the perfume still lingered where she stood। सिर्फ वहां पर क्या बच गया, जब वो चली गई सिर्फ वहां पर उसकी परफ्यूम की खुशबू वहां बच गई, जो जो वहां जहां पर वो लड़की खड़ी थी। ओके, नाउ moving ahead, there was some confusion in the doorway। ऐसा मुझे सुनने में लगा कि जरूर दरवाजे पर थोड़ी confusion हो गई है और एक आदमी, a man getting into the compartment, जो compartment के अंदर घुस रहा था, he stammered an apology। उसने ऐसा कुछ confusion डोरवे पे शायद हो गया है जिसमें जो व्यक्ति, एक आदमी जो कंपार्टमेंट की तरफ घुस रहा था, उसने ऐसा जल्दीबाजी में उसने बोला सॉरी, apology दी। Then the door banged and the world was shut out again। Then the door got closed, डोर बंद हो गया और हमारी पूरी दुनिया, बाहर की दुनिया बाहर रह गई। I returned to my berth, और मैं अपने बर्थ पे आकर चुपचाप बैठ गया। The guard blew his whistle and we moved off। Now the engine guard, उसने अपनी whistle बजाई और हमारी ट्रेन चलने लगी। Okay, once again I had a game to play and a new fellow traveler। फिर से एक बार मेरे कंपार्टमेंट में एक नया ट्रैवलर आ गया और again I had this game of conversation to play once again। Okay, the train gathered speed। Now the train was running in its speed। ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली और अब हम क्या हो रहा है, the wheels took up their songs and the carriage groaned and shook। So wheels ने अपनी अपनी जो उसकी छुक 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 ये वाली आवाज है ये उसने ले ली और जो कैरेज है उस वो अपना हिलता डुलता ट्रेन में चलने लगा। ट्रेन एक स्पीड में आ चुकी है। I found the window and sat in front of it। मैं जाकर खिड़की के पास बैठ गया, staring into the daylight that was darkness for me। And I started staring into the daylight और मैं daylight की तरफ देखता रह गया जो मेरे लिए, क्योंकि मैं अंधा हूँ सो मेरे लिए वो darkness की तरह है, लेकिन मुझे समझ आ रहा था कि मैं विंडो की तरफ फेस करके मैं daylight को देख रहा हूँ। Hello, Ahan, teacher and review. Thank you, Bacha, for joining in. Okay. Now, so many things were happening outside the window,
बहुत सारी चीज खिड़की के बाहर हो रही थी. It could be fascinating game guessing what went on outside there. So because the narrator is blind, so वो अपने में ही एक गेम खेल रहा है कि वो ये कोशिश कर रहा है कि वो बाहर की अगर चीज को गेस करे कि क्या क्या बाहर हो रहा होगा. So this would be an interesting, fascinating game. Okay. The man who had entered the compartment broke into my reverend. Now, the man who has entered the compartment, जो जो आदमी मेरे कंपार्टमेंट में आकर बैठा था, उसने उसने मेरी इस प्लीजेंट, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं बाहर देख रहा हूँ विंडो, इस रेवरेंड को मेरे तोड़ दिया. एंड वो कुछ बोलता है. क्या बोलता है? You must be disappointed. I am not nearly as attractive as a traveler companion as the one who just left. So he said कि आप जरूर निराश हो गए होंगे क्योंकि मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, नियरली उसके आसपास भी नहीं हूँ जितनी अभी आपकी, जो आप जिसके कंपेनियन के साथ जिससे ट्रैवल कर रहे थे, जो अभी तुरंत ट्रेन को छोड़ के गई हैं, उनकी तरह तो मैं बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं हूँ. सो जरूर आप निराश होंगे. She was an interesting girl, I said. The narrator said, हाँ वो बहुत दिलचस्प लड़की थी, बहुत interesting लड़की थी. Can you tell me, did she keep her hair long or short? और फिर नरेटर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस लड़की का बाल लंबा था या छोटा था. I do not remember, he said, sounding puzzled. So उसने कहा कि मुझे याद नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या उनका नाम, उनका बाल लंबा था या छोटा था. कंपेनियन, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेनियन? ट्रैवलिंग कंपेनियन मतलब बच्चा पार्टनर, जो आप एक कंपार्टमेंट में हो तो आपके साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो आपके कंपेनियंस हो गए. राइट. Right? Have you understood it? जैसे कि अगर आप एक रूम में हो तो आपके साथ जो लोग हैं वो आपके कंपेनियन हो गए. Okay, Ahan, I would welcome once again to you. Thank you so much, Vacha, for visiting in. Okay, now moving ahead, it was her eyes I noticed. Now, as the narrator asked कि क्या आप मुझे बता सकते हो उसका बाल लंबा था कि छोटा था, as मुझे याद नहीं है. So the other person replied that it was her eyes that I noticed. मैंने उसकी बाल नहीं नोटिस की भाई साहब, मैंने उसके eyes नोटिस किए, not her hair. She had beautiful eyes, क्योंकि उसकी eyes मुझे बहुत खूबसूरत लगी, and there were of no use to her. लेकिन अफसोस की बात है कि वो आंख उसके कोई काम का नहीं था. She was completely blind. Didn't you notice? क्योंकि वो पूरी तरीके से अंधी थी. क्या आपने ये नोटिस नहीं किया? Now this was the shocking turn and the climax of the story, that the narrator was trying to hide his identity of that he himself was blind, but at the end he came to know that the girl herself was a completely blind person. And इसीलिए जब उसने उससे पूछा कि बाहर कैसा है या फिर क्या दिख रहा है, तो उसने रिप्लाई किया कि आप खुद देख लो. और उसने फिर बदले में सवाल पूछा क्या आपको बाहर एनिमल्स दिख रहे हैं. So this is the most interesting turn that has been narrated by Ruskin Bond. Okay, now with this we have come to the end of my session. Thank you all of you for joining in. If you are new to my session, please do hit the like button and also subscribe to my channel, as you will be notified every time I come. You can also join me on Telegram and also on Instagram. The link is given in the description box below. My email ID is
I have told you बच्चा, my email ID is simran1596@gmail.com. अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, अगर आप मुझे कोई बुक्स, कोई पब्लिकेशन आप मुझे पिकअप करना चाहते हो, so आप मुझे इसमें उसका PDF भेज सकते हो. Thank you once again for joining in. I would now be taking a leave. All of you, if you liked my content, do hit the like button and share with your friends. Till then, we will meet very